Very happy morning to all of you students. Students, today in this video we are going to discuss the definition and the back exercise of the chapter Rain, Thunder and Lightning. Okay students, so we have done with the chapter Rain, Thunder and Lightning, and in this video we are going to start discussion on the definitions and the back exercise of this chapter. So firstly let us do the definitions. The first definition is steam. So what is steam? When we heat water, it gets converted to water vapors, and those hot water vapors are known as steam. Then the second is freezing point. Freezing point क्या होता है? It is the temperature at which a liquid freezes or it gets converted to a solid. It is called freezing point. Then the third is condensation. Now condensation is what? Condensation is a process, okay, by which a gas cools down and converts इनटू लिक्विड. ठीक है, वो प्रोसेस जिससे एक गैस ठंडी होती है और कन्वर्ट होती है एक लिक्विड में, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. देन द फोर्थ इज प्रेसिपिटेशन. सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड देन falling of these water droplets in the form of rain is called precipitation. Okay, then the fifth definition is percolation. Now what is percolation? When there occurs the rain, then the flow of that rain water down the earth surface, जब वो बारिश का जो पानी होता है जब वो अर्थ के सरफेस के नीचे चला जाता है थ्रू द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल, उसको हम क्या कहते हैं? परकोलेशन. और यू कैन से द सीपिंग आउट ऑफ वाटर डाउन द अर्थ सरफेस. ओके, उसको हम क्या कहते हैं? परकोलेशन. देन द सिक्स्थ इज लाइटनिंग. लाइटनिंग क्या होता है? बिजली कड़कना, है ना. सो द सडन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एकदम से होता है, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी हमें लगता है देयर इलेक्ट्रिसिटी इज देयर इन द स्काई, दैट इज नोन एज लाइटनिंग एंड इट हैपन्स ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल. ओके, देन द नेक्स्ट इज थंडर. नाउ थंडर क्या होता है? थंडर इज द साउंड विच इज कॉज ड्यूरिंग द लाइटनिंग. जब लाइटनिंग होती है तो आवाज़ भी आती है ना बहुत ज़ोर से, सो दैट साउंड इज नोन एज थंडर. देन द लास्ट डेफिनेशन इज ट्रांसपीरेशन. अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लीव्स ऑफ द प्लांट्स दे रिलीज वाटर इन द एटमॉस्फेयर. ऐसा प्रोसेस जिससे जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो वाटर को रिलीज़ करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन. ओके बेटा. देन द नेक्स्ट इज द बैक एक्सरसाइज. So the first is MCQs, that is a multiple choice questions. You have to tick the correct one. So the first is approximately what percent of Earth's surface is covered with water? So the correct option is option C, that is about 71%. Okay. Then the second question is water vapors that is formed by boiling water is called. This we have just done. दैट जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो जो वाटर वेपर्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं? स्टीम. ओके. देन द रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन इज. सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? सब्लिमेशन होता है जब एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन. तो इसका रिवर्स क्या होगा? जब एक गैस सॉलिड में कन्वर्ट होएगी, एंड दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू अ सॉलिड इज नोन एज डिपोजिशन. ओके, so that process is known as deposition. Next, the fourth one is which of the following processes is not a part of water cycle? तो इसमें से कौन सा वाटर साइकिल का पार्ट नहीं है? The options given to you are transpiration. Yes, by transpiration जो leaves होते हैं उनसे पानी जाता है in the atmosphere, so it is a part. Second is condensation. Third is combustion and fourth is precipitation. So combustion, because combustion doesn't involve any kind of water circulation from or in the environment, so that's why combustion will be the correct answer. Then the fifth is which of the following is a form of precipitation? So in this thunder, groundwater, cloud, snow. So snow is a type of precipitation which occurs on the earth's surface. Okay students, so this was the multiple choice questions. Now next, coming to true false. So the first one is the freezing point of water and the melting point of ice are same. So it is true. Both is 0 degree C. Right? Then the second is
precipitation always occurs as rain. So no, precipitation may occur as rain, snow, sleet or hail. Then the third is water cycle goes on continuously. Water cycle goes on continuously on the earth. So yes, because rain and the evaporation, condensation, cloud formation, that all keeps on occurring. Then the fourth one is the process in which a liquid changes into a gas. No, sorry. The fourth true false is lightning always occurs before thunder. So yes, because the speed of light is more than the speed of sound. So yes, the fourth is the correct one. It is true. Then the fifth is it is advised to stand under a tree during a thunderstorm. So it is false. It is not advised to stand under a tree because you may get a shock. So this was the back exercise, students. Fine. So go through the video and complete your work. Thank you. Have a nice day.